So, what is it about the Asia Cup 2023 which is worth discussing? I feel that the constant changing of the format sends a very strong signal, and that signal is that the Asia Cup is not being taken seriously enough. It is being seen as a step up to something bigger, whether it is the World Cup or not, whatever else is happening. So, those are the things that we need to talk about. And I have with me my dear friend CS, who's joining in. So, CS, first of all, the Asia Cup began as on a different format with a T20 format. Then suddenly it became a ODI format at a point in time. So this constant chopping and changing. What are the? In fact, I would correct myself that it began as an ODI. Then when ODI. 20 started, then it adapted to it. Why are we diluting this constantly? If you remember, Arup, in 1984, when it started, it was a kind of rivalry between India and Pakistan, which was to challenge the Ashes series. That was the basic, idea behind this entire thing. And during that time, 87 World Cup, see how all Asian teams fared. India, Pakistan reached semi-finals, and then unfortunately we lost out. And then Australia became champion. Then 92, Pakistan became world champion. Then Sri Lanka also became world champion. Then obviously India 2011. So basic idea was that, but unfortunately, because of the lack of political will, I would say, or lack of also will amongst our cricket administrators who are more interested in playing politics rather than playing cricket. This tournament has become like a football. You play this side, I'll play that side, but we will not reach a point जहाँ पर हमारी rivalry को importance दी जाए. अब वो हालात ही हो गए कि कभी इसको टी ट्वेंटी का वर्ल्ड कप होता तो टी20 बना लेते हैं. अब 50 ओवर है तो 50 ओवर कर देंगे. अगली बार क्या सिचुएशन होगी, 2 साल खेलेंगे ही नहीं, बीच में कई साल खेला ही नहीं गया, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के पास जाना नहीं चाहता. पाकिस्तान आना चाहता है, हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारा एक अलग सा एजेंडा है. तो Yes, वही मैंने hold that thought. I'll come to the second point, which is that now in 2022, when the Asia Cup happened, then Sri Lanka won the title in the T20 format. It was held in UAE, if you remember. Now the main point is Wasim Akram had a slight dig at India, saying that why are we constantly talking about India versus Pakistan? India didn't even reach the final then, and it is Sri Lanka who won. So anybody can win in this kind of format. Do you agree? What are your quick thoughts on it? Right now, looking at the situation, I think India is very, very formidable team. I have no doubts that it should be reaching final. Whether we win or not is a different issue. But being a host, Sri Lanka is a depleted side, but that doesn't mean you can, rule them out of this. On their own pitches, they are a very, very, competitive side. And look at players also coming in. They have a very balanced all-rounder side. And look at the Pakistan yesterday. How Babar Azam is in form, or Shaheen Afridi obviously is a key point. If he's injured, he's out of the game, the rest of the tournament, then that could be a setback. But otherwise, all three teams are very formidable, and I would love to see Bangladesh, how they are going to play today, because that's a very, very key game for Bangladesh. You're talking about Shaheen Afridi. So the latest reports which are coming in basically say that he wasn't in great shape after taking 2 wickets against Nepal. And they are saying that possibly the heat of Multan at 38 degrees got to them. But then India and Pakistan are used to the subcontinent heat. But after his long layoff, post his surgery, do you think he's still as potent a force as before, CS? But he's a potent force. There is no doubt that he's number one left-arm bowler. We have seen Mitchell Stark also, he was bowling so well, but despite that, nobody could swing or nobody could bring that ball like Shaheen Afridi, So I think he's number one left armer. And second, when we talk about injuries, everybody is coming from a, big layoff, whether it's Prasidh Krishna or Bumrah or Shaheen Afridi. So it's a kind of challenge for everybody to keep up their place, to be fit there and be fit for the upcoming World Cup. Otherwise, not Prasidh Krishna, obviously, he's not key player, but overall for Bumrah and Shaheen, if any of these players, if they go out of their side or of the World Cup, it will be a great setback for both the teams. CS, we have a few questions coming in also now from our viewers. And one of the question basically says that the Asia Cup is still seen as a preparatory event,
And despite top teams playing in it, including India, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, and Bangladesh, why? मैंने कहा ना, ये हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स जो है उन्होंने इस टूर्नामेंट को बर्बाद करके रख दिया. ये टूर्नामेंट वाज स्टार्टेड एज ए राइवल टूर्नामेंट फॉर, और द राइवल सीरीज फॉर एशेज. जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो राइवलरी चलती इन वनडे आल्सो इन एशेज, वो दैट वाज द मोटिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड वी वर प्लेइंग ऑलमोस्ट constantly. And if you remember during Dalmia times, if I'm right, before around 1987 or something, we signed a treaty between, boat treaty, that every year either Pakistan will come to India or India will go to Pakistan. That was the kind of response we were getting. But unfortunately, मैंने कहा ना, इस क्रिकेट को हमने बर्बाद कर दिया. तो इसका आंसर तो उन्हीं से पूछिए, उनके पॉलिटिकल मास्टर और हमारे पॉलिटिकल मास्टर. रादर उनके पॉलिटिकल मास्टर्स आर बेटर राइट नाउ. एटलीस्ट वो इंडिया आ रहे हैं. इंडिया को जाना पड़े, हमारे ऑफिशियल तो जाते हैं, हमारे ऑफिशियल जाएंगे, वो जो मिनिस्टर्स के बेटे हैं और वो सब कुछ घूमने जाएंगे, लेकिन हमारी टीम को नहीं जाने देंगे. There is another point which has come up, which I find it a bit strange, and if not, I also want to use the word ridiculous, which is that the Asian Cricket Council has slotted this Asia Cup in a World Cup year. So if it is a ODI World Cup, it becomes a ODI game. If it is a T20 World Cup, it becomes a T20 game. Now, why make it so ridiculous? And at the same time, they are justifying it on the grounds that इससे फायदा एशियन टीम्स को तो होगा ही, क्योंकि अभी ओडीआई वर्ल्ड कप आना है तो हमने ओडीआई बना दिया. जैसे कहते हैं ना, कंप्लीट जो कहते हैं इडियोटिक सी बात है ये. अगर कोई ये कहता है कि हमने ऐसा किया, हमने विंडो दे दिया है आरोप T20 को, यानी आईपीएल को हमने विंडो दे दिया. हम सबकी T20s को, और भी कंट्रीज अपना T20 ला रही है. कभी यूपी भी खिला रही है, कभी कोई स्टेट बिहार भी खिलाती है, हर जगह पे चल रहा है. क्यों? क्योंकि माल बन रहा है. लेकिन यहाँ पर जब एशिया कप की बात आती है, नोबडी इज ऑन द सेम पेज. हमारी जब मीटिंग्स होती है दुबई में, और जब ये कंट्रीज हमारी सब मिलती है, किसी का कोई सिर पैर ही नहीं है. पाकिस्तान कुछ और बात कर रहा था, आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम दुबई में खेल लेंगे. हम कहेंगे दुबई में नहीं खेल लेंगे, यहाँ पर कुछ और मामला बैटिंग का होता है. ये एक ऐसा चक्कर, कुचक्र मैं कहूँगा, ये चल पड़ा है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम राइट नाउ. द ओनली वे टू रिजॉल्व इज that India and Pakistan, then both their political masters, they sit together and again start that cricket diplomacy. 2004 में कभी नहीं भूलता, 2011 में कभी नहीं भूलता, जिस तरह से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स आए थे. हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने उनके साथ बातचीत की थी, बॉर्डर्स खोले थे, लोग देखने आए थे. वो मंजर कहाँ चला गया? क्या हो गया है हमें? हम क्रिकेट तो खेल ही नहीं रहे. हम तो यहाँ पर भी शायद वोट पॉलिटिक्स, वो भी उनकी भी अपनी वोट पॉलिटिक्स. देखिए, मैं क्रिकेट का जर्नलिस्ट, और मुझे मालूम है 30 साल से हमने क्या क्रिकेट को कवर किया है. बट पिछले 10-12 साल में मैं तो कहूँगा, इनफैक्ट 1999 ऑनवर्ड से हमने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया. दोनों का एशेज तो दूर, हमारी हालत ये हो गई है कि श्रीलंका बैंकरप्ट होती जा रही है, पाकिस्तान का बोर्ड ही बैंकरप्ट है. सिर्फ हम लोग पैसा बना रहे हैं और उनके प्लेयरों को खेलने नहीं देंगे. So in that case, then why continue with the Asia Cup format at all? If Champions Trophy was scrapped, then why not scrap this also? Because it has become so ridiculous, as both you and I agree, and I'm quite sure millions of viewers who follow cricket would also agree. And like you're absolutely right in saying, like, this is an Asian subcontinent. The cliffhanger fight is always between India and Pakistan. And if there is so much problem, so much trouble between the two nations coming together, then why have it at all? बिकॉज कहीं ना कहीं आपको अपनी माइट भी तो दिखानी है ना एशियन कंट्रीज को. व्हेन इट कम्स टू वोटिंग इन आईसीसी पैनल्स और कोई भी वोटिंग में, तो इंडिया और श्रीलंका ऑब्वियसली एक साइड पे होते हैं. पाकिस्तान अपनी पॉलिटिक्स अलग देखता है. और बिकॉज बांग्लादेश इज ऑल्सो इन द इंडियन फ्रंट, तो हमें कुछ मैचेस उनको, हमारे बोर्ड जो बायलैटरल सीरीज है या कोई इस तरह के टूर्नामेंट में, पैसा बहुत जाता है. अगर आप देखें ना, पैसे इन टर्म्स ऑफ जो हेल्थ ऑफ फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी, वो बहुत मैटर करती है, चाहे वो एशिया कप हो या हमारी बायलैटरल सीरीज हो. इसलिए इसको रखा हुआ है. अदरवाइज रिडंडेंट है. एशियन क्रिकेट काउंसिल को कोई नहीं पूछता, ना इनकी कोई पूछ है, ना कोई बुक्कत है. लेकिन यस, एक अपना हमारा क्लाउट है. हम अपने वोट्स को, खासकर बांग्लादेश, श्रीलंका को हम अपने साथ रखते हैं. और धीरे धीरे अगर एक्सपैंड हुआ और ये जो एसोसिएट कंट्रीज है, अगर ये भी आती हैं, अगर कल को नेपाल या कुछ, तो इस पर भी हम अपना क्लाउट रखें. और पाकिस्तान को
करते हैं और हम बड़ा ही प्राइड लेते हैं, हमने इनकी क्रिकेट को खत्म किया। Okay, let's now come down to the difficult topic of injuries. Shaheen Afridi, like I said, we've got information that he may even be a doubtful starter for the India versus Pakistan match, which should be great news for India because there's been already a lot of hype कि विराट कोहली कैसे खेलेंगे शाहीन अफरीदी को, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म बॉलर है और गेंद अंदर तेज आएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए उस पर आप सीएस बोलेंगे, लेकिन केएल राहुल एक और फेवरेट टॉपिक है हमारा कि भाई आप उनको ले आए, लंबे अंतराल के बाद इंजरी प्रॉब्लम थी, अब आते ना आते उनको फिर इंजरी हो गई तो मैच नहीं खेलेंगे। बुमराह को भी वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। And the other important part, CS, is that the Sri Lanka team has been hit by severe injury. 4 of their top seamers won't be playing in the match against Bangladesh because of injury, and they all have the ability to bowl at 145 clicks. So what do you think? देखिए, सबसे पहली बात, शाहीन अफरीदी नहीं खेलने को बहुत सेट है पाकिस्तान के लिए। उनकी बैटिंग बहुत फॉर्मिडेबल है। विदाउट शाहीन अफरीदी जो अगली ब्रेक जी CS, you better check your network a bit because the audio is not coming through. In fact, there is no audio from your side. If you can just check your audio. And the point I was making was that most of the teams are being hit by injury. So KL Rahul is again injured. He won't be playing for 2 matches. Shaheen Afridi has been hit by injury. He might miss the India versus Pakistan match, which is a big moment. And of course, Sri Lanka has also been hit by injury. 4 of their top seamers will not be playing against Bangladesh. And all the bowlers have the ability to bowl at 145 clicks. So Sri Lanka would also be very badly strapped, although they are so far playing in their own home ground. So that's a massive advantage that Sri Lanka has. But if you don't have the right team, then you have a problem. So that's where we stand. And again, someone like Bumrah will be kept in cotton wool. They are trying to figure out whether they can play him or not, and that remains to be seen. And post Ireland, it wasn't there was still not enough clarity whether Jasprit Bumrah can go full tilt or not. I have some other interesting points, which is that Sanjay Manjrekar made the comment that the top 3 India batters, they are very suited for an ODI format. So those 3 batters basically are Rohit Sharma, Shubman Gill, and Virat Kohli, and they are more suited in the sense that, according to Sanjay, that since they are inherently test players, so in an ODI format, which is a 50-over game, they know how to basically pace them out. CS, I was basically talking about Sanjay Manjrekar's comment that India's top-out batting order is pretty good, and it is good because Virat Kohli, Shubman Gill, and Rohit Sharma, all 3 are classic test batsmen, and they have a very sound approach to adapting to an ODI format. What kind of advantage would it actually translate onto the field? What do you think? I think there is no doubt that India has a depth in the batting. And but I'll be very curious to see, Surya Kumar Yadav, because this is the last chance for Surya. Because if he clicks here in Asia Cup, he has a chance for World Cup. Otherwise, the doors may permanently be shut on, Surya Kumar Yadav. He could be a
T20 batter. He could be even the leader or the captain, future captain, but not for the 50 over format. So next comes is, Virat Kohli. I think the kind of form now he's in right now, after scoring that century, 55 months after, scoring that century outside India. I think that should be doing a lot of good to his confidence. So he should be coming at number 3. I think he should be there permanent at number 3. And then number 4, you can always, pick and choose between Yadav or KL Rahul is not fit right now. So others can chip in. But India has a good side, all-round side, whether it's Ravindra Jadeja or even till the last, even Shami. Shami could bat a lot. So batting is not a problem. The problem is in fitness. The problem is in injuries. If after KL Rahul, if he comes back and if he gets injured, then his World Cup dream is over. If Bumrah comes, if he gets injured, India's World Cup dream will be over. Forget about Bumrah. And then yes, there is a question coming in from a viewer who says that why don't you take extra fast bowling all-rounders like Shivam Mavi, who have bowled consistently well. He's fast, he's quick, and he's young. So why leave him out? I do understand the problem that you cannot have more than a group of 15 or so. Also, there is a reference to Ashdeep, that he's done so well, but he's not been treated too well by the Pakistan side. So there are two names, Shivam Mavi and Ashdeep. First, Shivam Mavi. I think I was not very impressed with Mavi, the kind of approach or the way I have seen him bowling in IPL. So, but he has lot to learn. He's a youngster. He's a good batter also. He could come in that category, what I'm saying. I completely agree. But probably for this World Cup, or right now, he should not be the right candidate. Second comes is Arshdeep. If you look at his, the way he came up in the international level, he was a very promising start. He got the best start, or rather, he is the only bowler after, Zahir Khan, I would say, or Ashish Nehra. Even Ashish Nehra used to take it, out swinger was more relevant. और लेकिन अर्शदीप का वो इन स्विंगर चलना शुरू हो गया था, जो ग्रेट बॉलर्स की, जो शाहीन अफरीदी की आप बात करते हैं, जो अकरम की बात करते हैं, तो उनको क्यों नहीं ग्रूम किया जा रहा? उनको आपने पहले तो T20 खिलाना शुरू कर दिया. शुरू में हमने पता नहीं प्रोग्राम किया था, बट आई हैव आल्सो रिटर्न कि अर्शदीप को प्रोटेक्ट कीजिए, उसको टेस्ट खिलाइए, उसको T20 मत खिलाइए, उनको सीधा T20 IPL, वहां तो सबको मार पड़ेगी. वो तो फॉर्मेट ही ऐसा बना है कि आपको मारना है. उनका कॉन्फिडेंस भी लो किया, और अब ना रख करके टीम में उनका कॉन्फिडेंस और लो कर दिया. और ऐसे टाइम में जब अश्विन नहीं है, जब मैं बार बार कहता हूँ, बाकी की, चाहे वो पाकिस्तान की लाइनअप है, ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप है, इंग्लैंड की लाइनअप है, बाकी की टीम्स की लाइनअप देखिए, इवन श्रीलंका, और हमारे भी अब तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन बहुत होते हैं. अश्विन को ना रख करके आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? आप कुलदीप यादव इज ए स्टॉक बॉलर. ही कैन नॉट बी ए रेगुलर बॉलर एवरी टाइम. तो आई थिंक हमारे सिलेक्टर्स की प्रॉब्लम है, जिसके लिए शायद लोग भी थोड़े कंफ्यूज होते हैं, और उनको लगता है शायद सिलेक्टर बहुत सोच समझ के कर रहे हैं. लेकिन आपने वो स्टिंग तो देख लिया चेतन शर्मा का, कितना सोचते हैं और कितना समझते हैं सिलेक्टर कुछ बोलने से भी पहले. सीए साहब अश्विन की बात कर रहे हैं, तो हमारे गावस्कर साहब, हम सबके आइडल, उन्होंने कह दिया नाराज होके कि see, there is a team that has been selected, support it. If you don't like it, don't watch. I feel that is not on. I mean, it's a community of fans. If you see English Premier Football or football anywhere in the world, there's so much of talk, there's so much of rant and rave about who should be in, who should be out. अब आप ऐसे डिक्टेट दे देंगे कि भाई आपको नहीं पसंद है, मत देखो, तो ये गलत बात है. Look, Arup, I have never taken these people seriously. They are on board payroll. और अगर ये वही हालत है जैसे संजय बांजरेकर जिनकी बात कर रहे थे, एक बार उन्होंने तेंदुलकर को क्रिटिसाइज किया था, उनको कम्युनिटी वॉक से उठा करके फेंक दिया था, फिर उन्होंने लिटरली माफिया मांगी, ये सभी को मालूम है. और ये वही, खैर गावस्कर वगैरह तो कहते हैं ना, वो तो दे आर मोर लॉयल देन द किंग. तो इनकी चीजों को मैं सीरियसली, ये तो वही लिखते हैं. बीच बीच में गावस्कर साहब को कभी एक आधा फिट पड़ता है, जब एक अच्छा कॉलम लिखते हैं बीच बीच में. मुझे लगता है वही कॉलम वो खुद से लिखते हैं, बाकी सब तो घोस्ट राइटर लिखते होंगे. तो आई डोंट गो बाय व्हाट ही सेज. Okay, let's move on to a comment which has been made by Sanjay Bangar as an analyst, and it's an interesting one. He says that during the training camp at Bengaluru, he said we saw different pairs of players batting together as in the recent session. So it was Shubman Gill and Rohit Sharma.
KL Rahul and Rohit Sharma. And so the inference basically was that KL Rahul could be that floater that India has been looking for. He can open, he can come Number in four. number one, two, three, any of those positions. But then, what do you think? केएल राहुल, पहली बात, आप किन मैचेस की बात कर रहे हो? अगर बांगर साहब हैं, ये सब एनसीए, मैंने कहा ना, एक हॉस्पिटल है, वहां पर जाते हैं लोगों को, वहां थोड़ा रिहेबिलिटेशन भी मिलता है और कुछ मैचेस खिलाते हैं। मतलब कि किन मैचेस की बात कर रहे हो? वाज शाहीन अफरीदी वाज देयर और सम अदर वर्ल्ड क्लास प्लेयर? इट्स ए फ्रेंडली टूर्नामेंट्स दे प्ले देयर। वो भी फिटनेस कोई देखते हो, थोड़ा बहुत टेस्ट करते हैं, यो टेस्ट हो गया, ऐसे टेस्ट, ये सब कुछ होता है। बट व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग एट इंटरनेशनल लेवल, वो अलग ही वो प्रेशर है आपका, वो अलग आपकी जो कॉमरेडरी है दो बैट्समैन के बीच में, और आप फ्लोटर्स की बात कर रहे हो, एंड दैट टू जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। अगर अभी भी आपके फ्लोटर हैं तो बिलीव मी, आप फ्लोट ही करते रहेंगे पूरे टूर्नामेंट में। आपको इस टाइम पे बिल्कुल क्लियर कट टीम माइंड में होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, बोलो ना, केएल राहुल शुड बी नंबर 4, फाइन, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? इज ए वेरी फाइन बैट्समैन एंड विदाउट इंजरी, अगर उसको इंजरी ना हो, इज ए वेरी फाइन टैलेंटेड प्लेयर, टेक्निकली बहुत साउंड है, उनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। But the problem is he 100% fit? Are you actually experimenting with his fitness or Bumrah's fitness or Prasidh Krishna's fitness? And you are keeping Ashwin out because you don't like his face, or you are keeping some other players out because probably आपकी वो गेम में ठीक नहीं, फिट नहीं बैठते। तो somewhere I think अभी वे फ्लोटर वाली बात करना, आरोप, ये बहुत ही बेवकूफी, और मुझे लगता है बिल्कुल कोई नॉन क्रिकेटिंग बात है कि अभी भी आप फ्लोटर्स की बात कर रहे हो। बट फ्लोटर की बात तो हमारे कप्तान साहब रोहित शर्मा ने करी है। उन्होंने कहा है कि कुछ बैटर्स को प्रिपेयर होना चाहिए, कहीं से भी आप खेल लीजिए, व्हाई शुड यू ओनली प्ले इन वन पोजीशन? सो व्हाट डज दैट मीन? That means that you are unable to lead a side, which is obviously 2011 World Cup winning side, which is obviously a very formidable side, or playing in India on their own turfs. They should be starting, almost 90% favorite than any other team. But being a captain, you are unable to decide on the team or the playing 11, and that's where you are trying to justify your actions. So Rohit Sharma is not a great captain. I have never felt in the last 1 year or so, ever since he has become all formats captain, that he should be leading in India in all the formats. So I think he's not fit to be there in all formats. His own form, his own fitness, his own way of placing fielding there, or rotating, bowlers, or leading the side. I think he's नॉट ए ग्रेट, आई वुड से कोई एग्जाम्पलरी, कोई लीड कर रहे हो टीम को जिसमें हम बहुत तालियां बजाएं और उनका गुणगान करें। His own play should be under surveillance, or under attack, that if you don't lead India team to victory in Asia Cup, maybe we can find another captain, but that will not happen. That we all understand, because there are other pressures and other lobbies also. They work very hard behind the scenes. I know you don't have a great opinion about Rahul Dravid as a coach and his coaching But is he a coach? That is my problem. He was a great player, fine. No, but he was wait. not a great leader. He was not a great leader. I am coming to a point. So his last stint is the ODI World Cup. After that, his coaching contract ends. We all know that he came in from the NCA. But he was asked a question recently, CS, that what do you think about your coaching legacy? So his answer was, I don't think or care about legacies. I stay in the moment. So he is now in the ODI World Cup moment. Do you even remember that he was captain of India? He came as a winning captain from England. We won a series after a long time. He came back, he resigned, because nobody even actually acknowledged his contribution. Nobody has trust in his captaincy, in his leadership. During Greg Chappell era, it's a big thing, Maybe a book could be written on how Rahul Dravid played, मैं कहूँगा एक नेगेटिव कैरेक्टर ड्यूरिंग दैट एरा, जब बाकी के सब प्लेयर्स इनसे नाराज हो गए थे, बात नहीं करते थे ड्रेसिंग रूम में। दैट्स ए डिफरेंट इशू। बट इज ही ए गुड कोच मटेरियल? ये कोच कैसे बने? कोच तो बाय डिफॉल्ट किसी को भी बना दिया जाता है ना, कभी कुंबले, कभी किसी को, फिर किसी को गाली दीजिए, उसको बाहर कर दीजिए। अब राहुल द्रविड़ का भी, इनफैक्ट
जब ये सब इतनी बात चली है, तो मुझे एक बीसीसीआई के बड़े सीनियर बंदे ने बहुत अच्छा चीज बोली, आई डोंट टू नेम ऑब्वियसली, बीसीसीआई में सब कुछ सोर्सेज से चलता है, वरना मुझसे बात करना बंद कर देंगे लोग। तो उन्होंने यही कहा था कि राहुल द्रविड़ का तो बस मैं एक ही चीज कह सकता हूँ, हमने जल्दबाजी में अपने कमरे में एक हाथी को घुसा दिया। तो अब अगर वो हाथी को निकालने की कोशिश करेंगे, दरवाजा तो छोटा है, पहले भी हमने तो घुसा दिया धक्का मार के, लेकिन अब वो घुसाएंगे, अगर निकालेंगे तो बहुत सी टूट फूट हो जाएगी। सो लेट हिम गो, लेट हिम फाइंड हिज ओन वे। जिस दिन ये जाएंगे तो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। सो दैट्स द थिंग, आई एग्री विद दैट पॉइंट। ही इज नॉट ए कोच, ही इज नेवर कोच्ड एनीबॉडी। सडनली एकदम इंडिया की टीम को कोच करने लग जाता है, अरे ऐसा क्या हो गया? मैराडोना वाज नॉट ए ग्रेट कोच और पेले वाज नॉट ए ग्रेट कोच। आपने वही एक्सपेरिमेंट, बिकॉज किसी एक बड़े नाम को लाना था इंडियन टीम में, ले आए, कोच को नहीं लाए थे। रादर मैं कहूंगा कि इनसे जो बाकी के जो लोग थे जिन्होंने कोई लेवल 1 लेवल 2 कुछ कोचिंग का किया हो, वो तो ठीक है, रवि शास्त्री कमेंटेटर थे, वो अंदर जाके भी बॉयज बॉयज वो अपनी कहानियां सुनाते थे, ये अपनी कहानियां सुना रहे। तो खैर एनीवे, दिस इज अगेन ए डिबेट जिसमें हम पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं, और मेरे पास बहुत से किस्से भी हैं इनके। Okay, that's for some other time. So before we wind up, CS, we lost your audio on that important point about injuries. So can you quickly recap what you were saying then? And the reference to the context basically was KL Rahul getting injured, again missing 2 matches. Shaheen Afridi has a problem. Sri Lanka doesn't have 4 of his top pacers. So what kind of Asia Cup would this be? देखिए, पहली बात राहुल पे मैं कह रहा था कि राहुल ने बहुत अच्छा सा एक करारा थप्पड़ मारा अजीत आगरकर और बाकी के उनके साथियों को, कि आपको प्रोफेशनल हो गया, करोड़ों रुपए मिल रहा है, आप 2-3 साल रहोगे तो करोड़ोंपति होकर के चले जाते हैं। तो लेकिन आप जो बात कर रहे थे कि हम राहुल को, प्रसिद्ध कृष्णा को, इनको सबको लेकर आए हैं, बुमराह को लेकर आए हैं, तो ये आप क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाए हैं? जस्ट बिफोर द टूर्नामेंट, बिफोर द वर्ल्ड कप। And Asia Cup is very important as far as our morale is concerned, or how we are going to prepare for the World Cup. और being a host, ये हमारे ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। पाकिस्तान उतने प्रेशर में नहीं होगा। जिस दिन हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेंगे ना, पाकिस्तान बहुत रिलैक्स होगा, वहां का 1 लाख लोग हमें चीयर अप कर रहे होंगे और हमारी टीम अंडर प्रेशर होगी। तो इसलिए ये जो सब कुछ कह रहे हैं, जो पहला थप्पड़ पड़ा, इससे ही सीख जाइए कि शायद अभी भी अश्विन के लिए जगह होनी चाहिए, शायद अभी भी आपको किसी और प्लेयर को जो कि 100% फिट हो उसके लिए जगह होनी चाहिए। बट इफ दे गोइंग टू बी फिट, और अगर अपने को प्रूव करते हैं जो केएल राहुल नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए अच्छा। अदरवाइज आगरकर और बाकी लोगों के लिए अपनी साख बचाना है या अपनी जो नाक बचाना है, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और शाहीन अफरीदी के लिए we will end the show on this last question, which is coming in from a viewer, and he says, he or she, that Tom Moody could have been the best coach for India, yet we ignored him and chose Rahul Dravid instead. Although the person respects Rahul Dravid as the great wall of India, so do we, but possibly not as a coach. Tom Moody is a good name. Tom Moody has proved himself. Watmore was there, Tom Moody was there. There were so many other people, you know. But the point is, इन अंग्रेज लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम, जो जॉन राइट के साथ थी, उन्होंने एडजस्ट कर लिया था। वो ही बिकेम मोर इंडियन देन द एक्चुअली ओरिजिनल इंडियंस। वो लोगों के स्पाइक्स भी उठा लेते थे, किक बैक भी, कई प्लेयरों के नाम नहीं लेने चाहिए, वो उनकी दोस्ती हो गई थी। तो दैट्स हाउ ही सर्वाइव्ड ड्यूरिंग गांगुली एरा, क्योंकि गांगुली के भी खास दोस्त थे। देन केम ग्रेग चैपल। ग्रेग चैपल की भाषा 8 से 9 लोगों को समझ ही नहीं आती थी। वो कुछ और बोलते थे, सहवाग कुछ और करते थे। और मुनाफ पटेल तो कमाल के कैरेक्टर थे उन दिनों में, उनको एक लाइन नहीं आती थी अंग्रेजी की, तो वो कुछ भी बोलते रहे, वो भी चलता था। फिर वो राइवलरीज और वो जो कैंप्स क्रिएट हुए टीम में, वो गए। अब उसके बाद है गैरी कस्टन। गैरी कस्टन वाज एक्चुअली इंडियनाइज्ड कोच। उनको समझ आ गया था स्टारों को हाथ में लगा, दूसरों को खिलाओ। ही वॉज अ स्मार्ट प्लेयर। उनको पता अगर इनको हाथ लगाएंगे तेंदुलकर या बाकियों को, पाजी पाजी बोलो और खुश रहो। तो ही ऑल्सो स्टार्टेड कॉलिंग देम पाजी पाजी टाइप, यू नो, जो हमारा होता है। तो एक्चुअली आपको या तो कोच कोई ढूंढना है इस तरह का जो गैरी कस्टन के मोड में हो, या फिर वो जॉन राइट की तरह की सबके किट बैग भी उठा ले। अदरवाइज आपको इंडिया से कोच ढूंढना पड़ेगा। आपको ट्रेनर्स बाहर से लाइए, आप बाहर से फिजियोज लाइए, लेकिन कोच आपको इंडियन एक ऐसा बड़ा नाम चाहिए होगा जिसकी आप रिस्पेक्ट कर सकें। और वो जो रिस्पेक्ट वाले सारे लोग हैं ना, वो सारे कमेंट्री में अच्छा पैसा कमा रहे हैं। उनको कोचिंग में बहुत ज्यादा शौक नहीं है। उनको पता है हारे तो साला ये नौकरी भी जाएगी,
तो उनको लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। रवि शास्त्री आए थे, उनको कोचिंग से कोई लेना देना नहीं। गावस्कर साहब अपने कॉलम लिखने में और ऊपर से पैसा कमाने में लगे हुए। तो प्रॉब्लम है, देखो देयर इज ए प्रॉब्लम। आपका कोई छोटा प्लेयर आता है जो कोच अच्छा है, उसको आप सेटल नहीं होने देते क्योंकि उसकी ऑब्वियसली आपके सामने हैसियत कुछ नहीं होती। Okay, तो okay. टिल दैट टाइम Yes, we are running out of time. Just one last bit, and very quickly, that between among the Asia Cup teams, there is India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, and Sri Lanka. So, does it look like an India-Pakistan final, or like last time, what happened in UAE? We should be prepared for surprises. looks like India Pakistan because that suits a lot of people. So और दूसरा ये भी है कि that suits a lot, you know, money wise भी आपको कैलकुलेट करना चाहिए। इंडिया श्रीलंका ये वो पैसा नहीं आएगा, ना गेट मनी ना बाकी का स्पॉन्सर्स का। तो मुझे लगता है वो। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि इंडिया एंड पाकिस्तान कुड प्ले थ्राइस इन दिस टूर्नामेंट। तो एक हाइप भी जो मैं कहता हूँ एक ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि पाकिस्तान एक जीत जाए और हम दो, या वो दो और हम एक। तो एक ऐसा हाइप के साथ आप वर्ल्ड कप में आओगे। तो जो मैंने कहा था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और वो जहां वो खेलना नहीं चाहते थे, वहां एक कमाल का प्रेशर कुकर एटमॉस्फेयर होगा। और उस दिन वो जो कहते हैं धूम धड़का होगा वहां पे। Okay, we'll wait for that later. And so let's wind down on this Asia Cup show. And basically, जो निकल के आ रहा है वो यही है कि looks like it might be an India versus Pakistan final, no matter what the differences are between the two nations. But there are a lot of injuries which are plaguing the sides. They also have to contend with heat, humidity. Subcontinent teams are used to it, but it's already taking a toll on some players. For example, Shaheen Afridi, he seems to be a bit unwell, might miss the India-Pakistan match. Hope he plays, because then there will be, like they say, asli takkar. We'll be back again on Saturday. That's the day that India takes on Pakistan. और उससे बढ़िया टक्कर और क्या हो सकती है जब नीरज और नदीम की लड़ाई नहीं पचती, तो ये तो खैर एक अलग खेल है। Thanks for joining in. And thanks to the viewers for watching. Please keep sending your questions. You can also email us, and we will always respond. Thank you and goodbye.